Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Thanks for coming. Designers slap them together very quickly. I'll understand if you have to take a break, and they're often too rough. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. Alright, thanks for coming with me on and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault, as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb it, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Oh, एक सेकंड, मेरा वही बिल्कुल राइट पर किया, लाइव में स्टार्ट किया। वही क्यों होता है ये मेरे साथ ही क्यों होता है मगर मैं बहुत ऊपर चला रहा था। For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look.
bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. कोई जल्दबाजी नहीं बेटे इस जगह पे। ये टकला मतलब होता ना, अगर ऐसा कुछ पोर्टल मैं अगर होता या फिर मेरा कोई दोस्त होता डॉक्टर स्ट्रेंज, तो फिर मैं इसके जगह पे जाके इसको थोड़ा जूते मार के आता भाई। क्या नूबड़ागिरी करता है? नहीं ऐसा तो नहीं नहीं तो अच्छा चीज है भाई, तो अच्छा है। नहीं 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 Oh, he just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. यार ये बहुत एनोइंग है, मुझे नहीं खेलना तो करूँगा। ये बहुत एनोइंग है। अब जा सकते नहीं गया, ठीक है। ये मतलब इस जगह पे मैं इतना बार काट चुका हूँ ना कि ये तो मतलब क्या ही बोलूं इसको। अबे नहीं इसका हथौड़ा है भाई, ये हथौड़ा नहीं है, मेरा हथौड़ा इससे भी अच्छा है। कम से कम वो स्लिप तो नहीं करता ना। अबे मैंने तो पुश किया ओए, और टकले मैंने पुश भी नहीं किया। करते रहता है ऐसा भाई, क्या मतलब। भाई मैंने इतना कंप्लेन कर, मैं धीरे से कर रहा हूँ तो धीरे से हो रहा है, कभी कभी इतना फास्ट हो रहा है ना कि कंट्रोल ही नहीं है। ये देखो बच्चा तो नहीं है। मेरा एक क्वेरी है भाई, जिसने भी किया ना ये गेम, नहीं ये नंगा इसके अंदर फंसा कैसे? Oof, sorry about that. आगे नहीं चाहिए तेरा पक तू जा रही। नहीं ये तो मानना पड़ेगा, कभी कभी अच्छा काम भी करता है भाई। फंस गया जा ऊपर जा। यहाँ से आ जाऊंगा। इसका हथौड़ा मतलब कभी कोई फंस जाता है भाई, क्या ही बताऊंगा।
जाना होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कंट्रोल था। नहीं 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 नहीं, ऊपर नहीं जाना, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है मेरे को। अभी बहुत ऊपर तो चला गया था। नहीं 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 जाना नीचे, नहीं जाना बे, नीचे नहीं जाना। समझ क्यों नहीं रहे ये लोग? नहीं 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 नहीं। अबे जब पुश करना होता है तब तो पुश करता नहीं, तब तो घिसता रहता है। देखो अभी पुश कर रहा है। जिस तरफ जाना है उस तरफ तो जाता नहीं है, हम जाता है उसी उल्टी तरफ, उल्टी करने में। मतलब क्या ही बोलो। नहीं 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 यार, ये नीचे गिराने के लिए मतलब एकदम धीरे 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 धीरे, नहीं गिराना, धीरे धीरे धीरे, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। धीरे 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 भाई, इतना भी धीरे नहीं। आजा 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 भाई, आजा आजा। हाँ हाँ बुलडोजर आजा। नहीं उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं, आजा इस तरफ। चलो भी ठीक है। Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. भाई Mary तू चुप कर Pickford. ले भाई, तू चुप कर ले। मैरी पिकफोर्ड या कुछ भी है, बस चुप ही कर ले तू, बात मत कर। नहीं मैंने पुश कब किया भाई? मैंने पुश कब किया? कब किया मैंने पुश? मेरा माउस देखोगे क्या? कैम ऑन करूँ? Get nasty over there, boy. ये मेरे को एडिट करना है भाई। Going down the road feeling चुप bad. कर ले, I'm going चुप कर down ले the भाई, road चुप कर feeling ले। bad. Going down the road feeling bad, and I ain't going to be treated this way. Oh, Lay them blues up, boy, play. Down in the jail on my knees, down in jail on my knees, down in jail on my knees, and I ain't going to be treated this way. नहीं नीचे नहीं, नीचे They feed me नहीं on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese, and I ain't going to be treated this way.
Let's go town, boy. Hey, buddy. ये पीछे क्यों जाता है ये? मैं आगे आना चाहता हूँ, ये पीछे जाता है। Oh, ये no. पूरा गधा है। $10 shoe fits my feet. A $10 shoe fits my feet. देखो कैसे कर रहा है। $10 shoe fits my feet, and I ain't going to be treated this way. Going where the weather suits my clothes. स्किप कर रहा है ना। I'm going where the weather suits my clothes. $10 shoe fits my feet. A $10 shoe fits my feet. $10 shoe fits my feet, and I ain't going to be treated this. वो मेरा और एक अकाउंट से मैं देख रहा था, स्ट्रीम चल रहा था, ये I'm going where the weather suits my clothes, and I ain't going to be treated this way. लैग क्यों कर रहा है इतना? Turn down, boy, turn down. मैं नहीं खेल सकता भाई, मेरा मतलब पीसी मैं क्या बोलूँ मैं, वैलोरेंट खेलते एक मैच भाई, एक मैच वैलोरेंट ठीक है। वैलोरेंट ही खेलेंगे।
हेलो। টাইটেল চেঞ্জ করে দাও কত हाँ টাইটেল চেঞ্জ করে দাও টাইটেল বলতে ये तो आई फेल टू টাচ দ্য স্কাই প্লেইং ভ্যালোরেন্ট, আমি এরকম টাইটেল লিখছি আবার। থাম্বনেল হ্যাঁ করেছি করছি করছি ভাই, করা হয়ে গেছে। আমার মানে যাচ্ছে তাই আমি খেলছি, মাথা গরম হয়ে রেখে যাচ্ছে পুরো। लाइव कर दी तो आ गया है मेरे साथ मिस्टू भाव। तो हम लोग अब खेलेंगे दोनों मिलके वैलोरेंट। थंबनेल देख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिस्टू कितने व्यूअर्स है मेरे, देख के बताना। 2 वन मी और कोई अलग एक तुम और एक मैं। एक सेकेंड, पीएमएसजी एक सेकेंड, ये अच्छा तो पीएमएसडी एसपी आईडी से आया है। रुक, तो फिर दो दिखा रहा है। रुक जा एक सेकेंड। नहीं मेरा स्ट्रीम तो हाँ हो सकता है मेरा एक आईडी एक स्ट्रीम दिख रहा है जिससे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। भाई लाइक्स तो 5 हो गए, 5 लाइक्स एंड 3 वाचिंग नाउ। मैं शायद कुछ खोलूंगा एक अलग सा। ये है मिस्टू, वो एनीमे को कहाँ से देखो? एक वेबसाइट है जोरो.to। हिंदी तो बाबा ना, जापानीज से बाबा, इंग्लिश बाबा। वही तो मेरे को हिंदी में वो नारुतो देखने थे, नारुतो के फर्स्ट मतलब सब कुछ एपिसोड्स। पूरा नारुतो बारुतो सब कुछ पे जाओ, नारुतो बारुतो बारुतो नहीं, वो बारुतो नहीं बोरुतो है बे। बारुतो बोलता हूँ। ठीक है कोई नहीं, हाँ वेबसाइट का नाम लिख दे इसको। हाँ सारे नारुतो सुपीरियम सब कुछ मिल जाएगा। तू समझता है भाई, तू डिस्कॉर्ड पे लिख दे और तू वैलोरेंट ऑन कर, एक बार खेलेंगे हम दोनों। मैं एक मैच खेल जा रहा हूँ, तो वो मुझे एनिमेशन बनाना है। मैं फाइटर्स करूँगा। को एनिमेशन बनाऊंगा कौन? एनिमेशन एनिमेशन से मतलब एनिमेशन पे क्या करेगा? किस टाइप का एनिमेशन, या फिर एडिट करेगा क्लिप्स लेके? मत जब बनाओ मुझे एडिट करो। मतलब करके क्या होगा तेरा, वो बोल। चैनल कोई नहीं, तू छोड़ते रह। एक अनरेटेड खेलते हैं ना, वो लोग